Good morning, students. Welcome to Indian Economy and Public Finance online class. Today we will discuss about the public revenue. Okay. So, what is public revenue? Public revenue means the income of government. Okay. Whatever the government of a country earn income through all the sources. Okay. What are the sources? We will discuss in next slides. Okay. So, as per the definition, we can say that the public revenue means the income of the government of a country, and through what? Through the all sources. It's called public revenue, right? And according to the Denton economist, he said that the public income in broad and narrow sense, and in the terms of public receipt and public revenue, means according to the Denton, he said that public revenue can be identified through the two parts, or we can say in two terms. First is public receipt and second is public revenue. Okay, so we will decide, we will distribute, or we can say that there are two terms in public revenue. First is public receipt and public revenue. Public receipt means whatever the government is earning, and public revenue means whatever the public is the government is earning through the various sources, and how they use these incomes for the development of the economy, for the betterment of the citizens. Okay, we will discuss on this topic, but first of all, it is very important for us to understand how government earn, what are the public revenues, and what are the different sources from government earn their revenues. Okay, so public revenue includes income from taxes. Okay, so first the source of public revenue is the tax. Okay, the type, different taxes, the different type of taxes which government imposed on citizens, on businesses, on any other things. So whatever the income it comes from the tax through the taxes is one of the source of income of public revenue. Second is prices of goods. Prices of goods means those goods which are sold by the government. Okay, so जो गवर्नमेंट गुड्स को एंड सर्विसेज को जो वो सेल करती है, उससे जो अर्निंग करती है, that is the another part of the or we can say another way of, or another source of public revenue. Okay, and supplies by the public. Okay, enterprises and public enterprises revenue, okay, from the administrative activities such as gift and grants. These are the sources from which government earn, or we can say these are the sources of public revenue. So first one is income from taxes, second is prices of goods and services supplied by public enterprises. The next is revenue from the administrative activities. How administrative activities earn the revenues, like tax, like gifts and grants, other fees, okay, penalties, all these. So these are the sources of public revenue. In short, we can say the income of government. Public revenue means the income of government through all sources is called public revenue. Okay. So because we are learning about the public revenue, so it is very important for us to know what is public receipts. So public receipt include all the income which a government received during a given period of time. What are the given period of time? It may be a financial year, or it may be a quarter. Okay, so whatever the income which a government received during a particular period of time, that income is known as a public receipt, right? And how public receipts are calculated? How public receipts are get, like public revenue plus income from all other sources. So whatever the public revenue of a government, whatever the income of the government, it is add by the income from all other sources, and then we get the public receipt. What are the other sources? Like taxes, like grants, like gifts, like charges, administrative charges, and other sources. Okay, we will discuss in next slides. So when we add these all public revenue and income from other sources, we get the public receipt. But keep remember that public receipt means the income which a government received during a given period of time, right? A particular time period.
So particular time period के लिए जो भी income government ने earn करी है, that is known as a public receipt. And for public receipt, what will we do? We will add public revenue plus income from other sources. So this is about the public receipt. So before calculating or before finding out the public receipt, it's very important to find out the what are the revenues, what are the public revenues, what are the incomes of the government. And the second important thing is what are the sources, कौन से sources है जिसके through जो गवर्नमेंट है वो इनकम अर्न कर रही है. एंड गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर सोर्सेस जो है वो डिसाइड कर रखे हैं जहां से उसको इनकम अर्न करनी है. ऐसा नहीं है कि वो सडन कह देगा कि नहीं वो हमें इस सोर्सेस से ही इनकम चाहिए. नो, इट इज अ प्री डिसाइडेड सोर्सेस. वो प्री डिसाइडेड सोर्सेस है लाइक टैक्सेस, लाइक गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, लाइक administration, like this one, yes, like revenue from the administrative activities. Okay, prices of goods and services, sometimes we call prices of commodities and services applied by administration. And the so these are the sources of public revenue. So how we will get the public receipt? We will get public receipt, public revenue plus income from all other sources. Right? So now it is very important for us to understand what are the different type of sources of public revenue. How government earn income through this public these sources. So basically, the first and the most important source, that is a compulsory source of payment income of government, that is taxes. Okay. So as you all know that there are different type of taxes. Taxes are levied on citizens of India. So taxes are compulsory payment to government. Okay, without expecting anything in return or benefit to the taxpayer. So taxes, why government charge taxes from the citizens? Because government is saying that whatever the amount you are paying as a form of the tax, we are using this amount of taxes for the betterment of the society, for the development of the society. That's why we need some income from some part of your income as a tax for the development of the society and the development of the country, or we can say the development of the income. So, as an individual person, as a taxpayer, we cannot ask the government for giving anything return on behalf of the tax which we are paying. Okay, हम जो भी टैक्स पे कर रहे हैं उसके बिहाफ उसके अगेंस्ट में हम कोई चीज उनसे रिटर्न में नहीं आस्क कर सकते. लाइक टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न और बेनिफिट टू द टैक्स पेयर. बट क्योंकि ये कंपल्सरी है, मगर गवर्नमेंट ने एक टैक्स स्लैब क्रिएट कर रखा है जिसके थ्रू अब वो इंडिविजुअल पर्सन टैक्स पे करेंगे जिनकी इनकम हाई होगी. मींस लोअर इनकम वाले पीपल्स टैक्स के स्लैब में नहीं आते. कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से टैक्स स्लैब जो है गवर्नमेंट साइड करती है और किस तरीके से वो हायर इनकम्स जो इंडिविजुअल्स है उनसे वो टैक्सेस लेती है. उनका ये कहना है कि जो हायर इनकम पीपल्स है उनसे हम टैक्स लेंगे एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट टू दी all citizens through the development of the society. Okay. So, according to the Professor Silkman, he said that a compulsory contribution from a person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit of it. So, it is a compulsory contribution. We can say that the tax amount is like a contribution from the individual person to the government for the development of the society, for the betterment of the country. Right? So, it is a compulsory contribution. But because it is a compulsory contribution, it doesn't mean that each and every individual come and pay the tax to the government. According to the government का ये कहना है कि the tax will be charged on those person who came into the slab of the income tax. Means not everyone is every individual is included in the tax payment. Basically government का फोकस है कि हम higher income वालों जो individual persons है या जो corporations हैं या जो businesses हैं हम उनसे लेंगे जहाँ पे higher income है. ऐसे वो हम आगे डिस्कस करेंगे. So the main source, we can say the main source of public revenue is tax. Now, what are the characteristics of a tax? It is a compulsory contribution. Okay, you cannot ask the government for anything return on payment of tax. आप return में कुछ नहीं कह सकते हो. आप it is a compulsory payment. Okay, we can say it's a compulsory contribution.
personal obligation to pay tax cannot be incurred for taxpayer benefit alone, but for the common interest. What are the common interests? Common interest is the betterment or development of the society or the country. Okay, so it is a common interest. Okay, we can correlate this common interest with the development of the society or development of the country. So the main characteristics of a tax is a compulsory contribution to the individual person, or we can say to the taxpayer, and it is very important for an individual person to have a eligibility of tax pay. Okay, आप eligible हो कि नहीं ये भी बहुत important होता है, and how you will be eligible according to your income. If you are a salaried person, it means your whatever your salary is, is it coming under the income tax slab or not? Okay, अगर आती है तो then you will be that eligible for the tax paying, otherwise you will not. And if you are a businessman, then your profit is coming into the criteria of tax paying tax slab or not. Okay, तो वो आपकी eligibility बताएगी आपके business की कि आप tax पे दायरे में आते हो कि नहीं. The profit, because the tax is charged on the profit of the business. Okay? Now, what are the elements of tax? As we all know, as we discussed, that tax is a compulsory contribution, are imposed by the government only. Remember this line, as you can see on your screen, that are imposed by the government only. The tax slab is created by the government and it is imposed by the government only. सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको इम्पोज कर सकती है. Why? Because government is an authorized person or authorized institution who prepare the tax slab and who impose the tax to the individual persons, or we can say in the country. The aim of taxation is the welfare of the community. As I told you, what are the why government is charging tax from the individual persons? Why? Because of the common interest. And what is the common interest? It is the welfare of the community. Okay? गवर्नमेंट का कहना है आप हमसे रिटर्न में टैक्स के बदले में कुछ नहीं मांग सकते, मगर हम आपको टैक्स का पे रिटर्न में देंगे बहुत कुछ. वो क्या होगा? दैट इज द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. A tax is not imposed upon an individual to release the cost of benefit to him. Because means individual person अगर ये कहे कि I am paying because I am paying the tax, so what will be the benefit for me as an individual? Okay, मैं क्योंकि इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा हूँ तो एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए बेनिफिट क्या होगा? सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट फॉर द टैक्स पेयर. इट इज अ कॉमन interest. What common interest means? The welfare, the development of the society, the betterment of the society. So, as an individual, you cannot ask for the government that I am paying the tax. So, what will the individual benefit for me? No, there is no individual benefit for any taxpayer. It is a welfare of the community. Okay, may be assessed on income or capital, but they are actually paid out by individual. Okay, if you are a salaried person, the tax will be divided on your salary. Okay. If you are a business person, if you are a businessman, then the tax will be divided on your profit. Okay, आपका क्या profit है, आपने कितना earn किया है financial year में, but it will be paid by the individual person. Right? आप अगर salaried person हो तो आप pay करोगे, अगर आप businessman हो तो आप business के behalf में आप pay करोगे, business चल के नहीं जाएगा pay करने. So this line is saying that it is actually paid by the individual, whatever the sources. It is a salary or a capital. So our tax is legal collection. Okay. So now the rules and regulation included in the tax made it legal collection. Okay. So if अगर आप ये सोचते हैं कि आप टैक्स नहीं पे करोगे, अगर आप टैक्स के अंदर आते हो और आपका कहना है कि नहीं हम टैक्स नहीं पे करेंगे, तो आपको लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में हो सकता है. Why? Because of the nature of the tax, that is a legal. What is the nature of the tax? The tax is legal. Okay, illegal है because of the law, because the law included in it. Government ने इसके लिए rules and regulation बना रखे हैं, कई penalties भी create कर रखे हैं. So these are the elements of tax. The first one is a compulsory contribution, and it is only imposed by the government of a particular country, and the aim of the tax is to the welfare or the development of the community. And as an individual person, you cannot ask government for the benefit of individual benefit of, on behalf of the taxpayer. It is a common interest. Okay, and it is charged on your income, your capital, but paid by the individual person. And it is a legal collection. Okay, legal collection means अगर आप in future में अगर आपने जो भी tax pay किया है, अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट को, आरटीआई के थ्रू अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए कुछ भी कहते हैं
cumulative जो पे किया है वो कहाँ कहाँ पे उसका यूज हुआ है. Most of the some of the people ask the government that this then I am a regular taxpayer and it is my right to know where my tax amount is using. That means government कहाँ उसको use करेंगे. You can ask because it's a tax, it's a legal collection. Okay. Now because the income, the sources of income of public revenue is tax, and there's another sources of income of public revenue, and the other source of public revenue, income of public revenue is administrative revenues. So, what are the administrative revenues? First one is fees. Fees means whatever the services you are taking by the government company or public company. So on the behalf of that service, that public service, you pay some fees. Okay, you pay some charge. So that can be one of the source of the administrative public revenue, and that type of fees come under the administrative revenue source. Okay, आप इसको fees को administrative revenue की category में कर सकते हैं. Second is license fees. Whatever the services means like आप अपने कंट्री में रोड पे चलते हो तो रोड पे चलने के लिए सपोज दैट आप व्हीकल यूज कर रहे हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो आप उस रोड को यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो रोड है वो मैंने बना के आपको दी है, आपको उसमें चलना है तो आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए बिकॉज हम आपको ऐसे जो है गाड़ी वहाँ पे नहीं चलाने देंगे. तो दैट फॉर दैट पर्सन रीजन यू नीड लाइसेंस. सो लाइसेंस के लिए आप पब्लिक कंपनी के पास जाते हो और लाइसेंस इशू करने के लिए वो आपसे कुछ फीस लेते हैं. दैट फीस दैट लाइसेंस फीस इज कम अंडर द administrative revenue and it is one of the source of public revenue. Okay. Special assessment, fines and penalties. You all know what are the fines and penalties. अगर आप कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको फाइन्स एंड पेनल्टीज देनी होती है एंड दैट इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज. ओके. For features and these all are the administrative revenues. Okay. So let's learn in detail about the administrative revenues. So fees, as I told you, is payment charged by the government to bear the cost of administrative services. So whatever the public services you are taking or whatever the administrative services you are taking, so it is a rule of the government that you have to pay some fees against that services. Okay, so that fees is comes under the administrative revenue. And fees is to be paid by those individuals who receive special benefit from the services rendered by the government. Okay, आप सपोज दैट कि आप जो है सिटी बस, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कानपुर में अक्सर ये न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं कि हम फीमेल्स के लिए जो है बस सर्विसेज जो है गवर्नमेंट का कहना है, यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि हम फीमेल्स के लिए हम जो है स्पेशल बस निकालेंगे, उसमें से फीमेल्स ही ट्रेवल करेंगे. तो उस सर्विस को आपने यूज़ किया, आप उस बस से आप डेली अपने कॉलेज आते हो और उसको आप जो बस के लिए आप जो रेंट आप पे कर रहे हो, जो आप किराया उसको दे रहे हो, दैट इज नोन एज अ फीस. ओके, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पब्लिक सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो जो आप रेंट आप उसको पे कर रहे हो दैट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. ओके, अभी आप जो भी रेंट पे कर रहे हो वो रेंट का गवर्नमेंट क्या यूज करेगी? गवर्नमेंट विल यूज दैट रेंट अमाउंट एज द सैलरी ऑफ द ड्राइवर, द सैलरी ऑफ द कंडक्टर and even the welfare of that maintenance of that bus. Okay, so गवर्नमेंट आपसे जो भी फीसेस या जो भी चार्जेस ले रही है वो रिटर्न में आपको ही देती है इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज एंड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. ओके, so fees are the byproduct of the administrative activities. So we can say whatever the services, whatever the public services or administrative services we are using, and on behalf of that services, whatever the fees we are paying, that is known as the administrative revenue. Okay, and in turn government ही आपको उस फीस के टर्न में, उस फीस के बदले में आपको फिर से सर्विसेज देती है जो आपके वेलफेयर के लिए होता है. आप एज एन इंडिविजुअल उसको फीस को पे कर रहे होते हैं, मगर जो रिटर्न सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है वो एक कलेक्टिव सर्विस होती है फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बाय बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. Because the aim of the public revenue, or we can say the aim of the government is the welfare of the society, not the individual person. And society कैसे बनती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है. हम इंडिविजुअल से मिलकर तो सोसाइटी मिलती है. ठीक है.
Now, next is license fees. A license fees is paid in those instances in which the government authority is invoked simply to confer a permission or a privilege therein to perform a service of a more or tangible and definite sort. So we can, as I told you that example of vehicle, okay, आपने जो भी vehicle use किया रोड पे चलने के लिए तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए, and for that license you need to pay some fees, so that fees is known as license fees. Okay, लाइसेंस फीस में आपने जो भी अमाउंट पे किया है वो गवर्नमेंट के पास आपकी गई है, और गवर्नमेंट इन रिटर्न आपके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, आपके लिए बेटर रोड्स जो है वो बना के दे रही है, रोड पे लाइट फैसिलिटीज आपको दे रही है। अभी आप अपने कानपुर में देखिए स्टूडेंट्स, हमें मेट्रो सर्विसेज भी मिल रही है, राइट। मेट्रो सर्विसेज मीन्स आप फास्ट सर्विसेज यूज करने जा रहे हैं फ्यूचर आने का अपकमिंग टाइम पे, नॉट फ्यूचर हम कहेंगे क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे कानपुर में मेट्रो स्टार्ट होने वाला है, तो इन अपकमिंग टाइम हम जो है फास्टेस्ट सर्विसेज जो है वो यूज करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो चार्जेस या फीस हम पे करेंगे वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, और गवर्नमेंट हमें रिटर्न में क्या देगी, गवर्नमेंट हमें रिटर्न में क्या करेगी कि वो उसको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। वो बात दूसरी है बच्चों की, हमारी जो मेट्रो सर्विसेज है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आई है, बट वी कैन से द कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट ने अगर परमिशन, यूपी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी होती स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे सेटअप नहीं हो पाता। ओके, तो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू इज रजिस्ट्रेशन फीस। वट एवर सर्विसेज, आप सपोज करिए कि आप कोई सर्विसेज गवर्नमेंट की ले रहे हैं जिसमें आपको उन सर्विसेज को लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कि आप इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम लाइसेंस का ही ले सकते हैं। लाइसेंस आपको करवाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। व्हाई रजिस्ट्रेशन? बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू आइडेंटिफाई, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करना चाहती है कि उसने एक टाइम पीरियड में कितने लोगों को जो है लाइसेंस इशू किया है। तो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको पे करनी होती है, बहुत ही मिनिमम जो कि आपके चार्जेस होते हैं। आपने अभी अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहां पर भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, so registration is very important. Why? Because to identify how many people are registered for that particular services, and for that services government charge the registration fees. So the registration fees can be one of the source of the administrative revenues. Okay, regulation and control of activities and maintain law and order. Okay, and not only government सिर्फ आपको रिटर्न में सर्विसेज ही नहीं दे रही है, आपकी जो भी फीस पे हुई है, they also impose some regulation and control. Why regulation and control? Because to control the people. अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाएंगे तो हर इंडिविजुअल पर्सन जो है अपने अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। वो चाहेगा तो फीस नहीं जमा करेगा, और चाहेगा तो फीस जमा करेगा, राइट। आपने देखा होगा आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इस टाइम पीरियड तक आप अपना काम करिए तो आपके चार्जेस इतने लगेंगे, और आफ्टर दैट उसके आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। सो दैट इज द रूल्स ऑफ कंट्रोल। ओके, सो दिस आर द सम sources of administrative revenue that can be called as a income of public revenue. Okay, income of government. Next is special assessment. What is a special assessment? Means a compulsory contribution levied in proportion to the special benefit derived to verify the cost of a special improvement to property undertaken in the public interest. Okay, and element of a special purpose, a special benefit is measurable, not progressive divide for special improvement. आप कोई भी special improvement का मतलब हो गया, for suppose that कि आपने किसी particular fund में, किसी पर्टिकुलर चैरिटी में जो है आपने जो है गवर्नमेंट फंड या गवर्नमेंट चैरिटी पे जो है आपने कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और वेदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिजास्टर अपनी कंट्री में हो जाता है, या फिर अदर किसी कंट्री में नेचुरल डिजास्टर हुआ है, ठीक है, और आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इसमें कंट्रीब्यूशन करना ही करना है, राइट। सो दैट कैन बी, आप यहाँ पर उसको इनकम की तरह यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कॉल इट एज अ इनकम ऑफ द प्रॉपर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज हम इसको किसी के वेलफेयर के लिए दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट ने आपसे ये आस किया, आप अक्सर देखते होंगे आपके मोबाइल फोन पे या टीवी पे आपके पास अक्सर ये न्यूज आ रही है कि पर्टिकुलर फंड जो है इस सेक्टर में जो है वो जो है इश्यूज आ रहे हैं, या नेचुरल डिजास्टर हुआ है हमारे किसी स्टेट पे, हमारी कंट्री के स्टेट पे, तो गवर्नमेंट रिलीफ फंड में जो है आप पैसा जो है वो दीजिए। तो दैट कैन बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ पब्लिक इनकम, बट दैट इनकम विल बी यूज्ड 100% यूज्ड फॉर दैट द मैन, जो जिस पर्पस के लिए उसको दिया जाएगा उस पर्पस में उसको दिया जाएगी, ना कि गवर्नमेंट जो है आपको रिटर्न में कोई सर्विस देगी उसमें। ओके, रिमेंबर दिस, इसमें इस तरीके के कंट्रीब्यूशन में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपसे वो कंट्रीब्यूशन कराया गया, राइट।
Now, next is fines and penalties. You all know, if you break any rules and regulation that is imposed by the government, अगर आप कोई break करते हैं, तो you pay some fines and penalty, and fine and penalty can be one of the source of administrative revenues. Okay, forfeiture means on basic security bond not appreciated in court. ओके आपका कोई लीगल सपोज करिए कोई लीगल आपका काम था और आपने जो है उसको टाइम पे पूरा नहीं किया, आपको उसके बदले में कोई चार्जेस पे करने पड़ेंगे, दैट विल कैन बी वन ऑफ द administration revenue. Okay, and claim of the government to the property of a person who dies without will and without any right. Okay, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपने उसको किसी को भी नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया बच्चे, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट उसको ले लेगी क्योंकि उसका कोई नॉमिनी नहीं है, आपकी डेथ हो जाती है, आपने कोई नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया, तो दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, so it can be one of the source of the administrative revenues. Okay, so these are the revenues, different types of revenue. So we can say that the sources of public revenue is the first and compulsory source of public revenue are taxes. Okay, and then is administrative revenues, and these are the sub sources of administrative revenues, or in other words we can say through these platforms, or we can say these through options, the revenues are earned by the administrators. Okay, and ओके, टैक्स के बारे में मैं आपको बता रही थी. यस, टैक्स के बारे में आपको ये बताई थी कि टैक्स आर कंपलसरी. ओके, तो कंपलसरी है, बट उसमें एक इशू ये भी आता है बच्चों कि टैक्स इज नॉट लिवाइड ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. सभी इंडिविजुअल के ऊपर इसको चार्ज नहीं किया जाता है. व्हाई? बिकॉज टैक्स का क्राइटेरिया जो बनाया जाता है, टैक्स के क्राइटेरिया में ये ट्राई किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हायर इनकम एंड हायर प्रॉफिट अर्न करने वाले जो इंडिविजुअल पर्सन हो वो उसके अंदर है, राइट. और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इन टैक्स के अमाउंट को यूज करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और उस सोसाइटी में वो पर्सन भी इंक्लूड होंगे बच्चे जो लोअर इनकम के अंदर आते हैं, राइट. सो गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली कहना यह है कि वी विल डायरेक्टली चार्ज. ठीक है, टैक्स में आप देखते होंगे टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं. एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है. Direct tax means those tax which are charged on the income and profits of the individual, तो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है. एंड इनडायरेक्ट चार्जेस में क्या होता है कि हम किसी की इनकम में चार्ज नहीं कर रहे होते हैं, मगर वहां पे इनडायरेक्टली हमारे पास टैक्स आता है. फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपकीपर, ऐसा स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है, आपकी इनकम जीरो है, राइट, आपकी कोई इनकम नहीं है इस टाइम पे बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, बट आपसे कैसे गवर्नमेंट टैक्स पे करे, आपसे कैसे टैक्स ले, तो आप क्या करें, गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, राइट, गुड सेल नहीं, सर्विसेज. सर्विसेज जब प्रोवाइड करेगी तो आपसे इनडायरेक्टली वो टैक्स लेगी. फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में गए और आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया और जो आपके पास बिल आया, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का जो ऑनर होगा वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा बिकॉज ही इज रनिंग अ बिजनेस. तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर रखा है कि आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आपको टैक्स मुझे देना होगा. तो जो रेस्टोरेंट ऑनर होगा, जब आप उसकी सर्विसेज लेंगे और जो वो सर्विसेज के बदले में आपको बिल देगा पेमेंट के लिए, तो उस पेमेंट में टैक्स इंक्लूडेड होगा. सो इनडायरेक्टली आप जो होंगे वो टैक्स पे करेंगे. किसको? रेस्टोरेंट ऑनर को. रेस्टोरेंट ऑनर जो होगा वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, राइट. तो गवर्नमेंट का कहना है कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ टैक्सेस. द फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स में हम डायरेक्टली उन पर्सन से टैक्सेस लेंगे जिनकी हायर इनकम एंड हायर प्रॉफिट है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम उन लोगों को इंक्लूड करेंगे जो डायरेक्टली हमें टैक्स पे नहीं करेंगे. तो एनी हाउ गवर्नमेंट इज taking tax amount from each and every individual person, but in two ways. First is direct and second is indirect, right. So these are the sources of public revenues. First one is tax and second is administrative revenue. There is another type of source of public revenue, that is gifts and grants. Okay, so gift means gifts are voluntary contribution from private individual or non-government donors to the government fund for a specific purpose, right. Suppose that कि आपको बच्चों जो है
फॉरेन कोई आपके पास कोई फॉरेन कंट्री से किसी ने आपको गिफ्ट पे किया है, राइट? तो जो गिफ्ट पे किया है उस गिफ्ट पे का अमाउंट कितना है, उस अमाउंट पे जो है वो टैक्स गवर्नमेंट लेगी आपसे। या फिर अगर आपने कोई रिलीफ फंड या डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, लाइक ग्रांट्स, इसमें कोई टैक्स तो नहीं है। बट ग्रांट्स का मतलब क्या हुआ कि आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने किसी पर्टिकुलर ग्रांट के लिए जो है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने जो है गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट किया, लाइक रिलीफ फंड और डिफेंस फंड। रिमेंबर, इट शुड बी गवर्नमेंट फंड, राइट? आप किसी प्राइवेट फंड की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। आपने किसी रिलीफ फंड या डिफेंस फंड के लिए आपने जो है कंट्रीब्यूशन किया है, तो दैट विल बी वन ऑफ द इनकम ऑफ द पब्लिक, ओके, गवर्नमेंट, नॉट डायरेक्ट बेनिफिट टू द डोनर। अभी इस तरह के कंट्रीब्यूशन में आपको भी बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको गवर्नमेंट रिटर्न में कोई सर्विसेज नहीं देगी। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग फॉर द रिलीफ फंड और डिफेंस फंड फॉर अ स्पेशल पर्पस। हाँ, आप डायरेक्ट टैक्स जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे आपको रिटर्न में सर्विसेज मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, बट नॉट हियर। एंड फॉरेन मींस आपको अगर फॉरेन कंट्री से कोई गिफ्ट मिला है तो दैट विल बी चार्ज बाय द गवर्नमेंट, टैक्स जो है उसे चार्ज होगा, दैट विल बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पब्लिक। एक सोर्स और भी होता है, लाइक लोन, ओके। लोन मीन्स जब गवर्नमेंट किसी अदर कंट्री को लोन दे रही है और उसके बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, दैट विल बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, ओके। Okay, students. So I hope you all understand what is public revenue, and it is a very important topic. So keep remember there are few sources of public revenue. That is, first one is the compulsory, that is tax. Second is administrative revenues, and third is gifts and grants. These all indicate the sources of government, and anyhow government use these income for the benefit or the welfare of the society. And who is society? The individual persons group, okay। individual person, हम और आप जैसे individual person मिलके एक society को बनाते हैं, and services जो government हमको देगी उन income के against में, that services is for the welfare of the society, for the welfare of individual persons. Okay, students, so I hope you all understand what is public revenue. So that's all for today. Thank you.